Good morning, students. Today I am going to start with part 2 of our chapter South Asia and the Contemporary World. Today I'll take Sri Lanka, Maldives, ठीक है ना, and SARC and India's relation with its neighboring country, the most important topic of the chapter. So first of all, I am going to take ethnic conflict of Sri Lanka. So Sri Lanka is basically, you see, is a island country, ठीक है ना, that is just like as a drop in the Indian Ocean, ठीक है ना, in the south of India, and the strait that separates India from Sri Lanka is Park Strait, ठीक है ना. So and according to 2015-16 census, its population was near about 20.3 million. Sri Lanka has successfully maintained its democracy since its independence in 1948, but it faced a prolonged civil war. देखो, उसको लिबर्टी तो आज़ादी मिल गई, फ्रीडम मिल गया, बट श्रीलंका में बहुत लंबी सिविल वार चली है. इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स, आफ्टर द इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स इन श्रीलंका वाज डोमिनेटेड बाय द फेसेस, ठीक है ना, the neglect of Tamil interest. The issue of the civil war you have studied in your 10th standard ethnic issue of Sri Lanka, that the liberation of Tamils, tigers of Tamil Ilam, ठीक है ना. So the Tamils, basically the ones who are having, there are two types of Tamils in Sri Lanka. One is with the Sri Lankan origin and one is the Indian origin, ठीक है ना. So the liberation they demanded, means their rights are seems to be undermined in Sri Lanka, because Sinhala is a community that is in majority in Sri Lanka, as you all know that, ठीक है ना. So the neglect of Tamil interest led to the rise of militant Tamil nationalism under the leadership of LTTE, Liberations Tamil Tigers of Tamil Elam, since 1983, demanding for a separate Tamil Elam states. The Tamils, those who are residing in Sri Lanka, they are demanding for a separate state. Since it involved the interest of the people of Indian origin also, as I told you, and the government of India mediated in this crisis. So, after the signing of Indian-Sri Lankan Peace Accord on 29th July 1987, the Indian peacekeeping forces were sent to Sri Lanka. Eventually, the involvement war with LTTE, that is लिट्टे, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं, presence of the Indian troops was also not liked by the Sri Lankans. In 1989, the IPKF force were called back without attaining its objective. So ना, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस जो है वो वापस बुला ली गई विदाउट एनी, जो है उसका ऑब्जेक्टिव अटेन नहीं हुआ था. सो आफ्टर ए 26-year military campaign, the Sri Lankan military defeated the Tamil Tigers in May 2009, bringing the civil war to an end. ठीक है ना. Prabhakaran was killed the Sri Lankan forces by the Sri Lankan forces. Prabhakaran, he was the leader, ठीक है ना, of the Sri Lankan Tamil forces, that was killed in Sri Lankan forces by 19 May 2009. What was the ethnic conflict? As you all know, this was the ethnic conflict in Sri Lanka and the restoration of them. Despite the civil war, Sri Lanka has successfully controlled over its growth of population. That is the most important factor. It is the first country in this region to liberalize its economy. सबसे पहला देश था जिसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया. It has the highest per capita GDP in this region right through the warriors. Warriors से ही श्रीलंका की GDP कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी रही है. Over and above all, it maintained a democratic political system. और इन सब के बावजूद सबसे अच्छी बात जो वहाँ पे रही वो ये कि उन्होंने अपना जो है वो डेमोक्रेटिक जो है वो बना के रखा, पॉलिटिकल सिस्टम बना के रखा. नाउ कमिंग टू मालदीव्स. मालदीव्स इज एन अनदर स्मॉल, ठीक है ना, मेड अप ऑफ संस्कृत वर्ड माला द्वीप, मीन्स अ गार्लैंड ऑफ आइलैंड्स, ठीक है ना, छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है, तो उसी को बोला गया है मालदीव. मालदीव्स इज अ सल्तनत बिफोर बिकमिंग अ ब्रिटिश प्रोक्रेलेट इन 1887.
It gained its independence in 1965 and became a republic in 1966. Ibrahim Nasir became the first president, followed by Moon Abdul Gayoom. ठीक है ना? dominated the political scenes of Maldives for 30 years. 30 years तक इन्होंने वहाँ पे रूल किया है. But widespread protest against his government and his style of functioning started. But इनके खिलाफ काफ़ी protest चलते रहे. Reforms were initiated and a new constitution came to be in August 2008. The first ever presidential elections in Maldives under a candidate multi-party system was held in October 2008, in which Nasheed got the elected as the president of Maldives. ठीक है ना? So Maldives में भी काफ़ी crucial diplomatic political system रहा. ठीक है ना? One of these leaders, they are going to kill each other. ठीक है ना? इन्होंने एक दूसरे को मारा है. यामीन गवर्नमेंट ने फंक्शन किया अथॉरिटेटिव एंड ऑटोक्रेटिक मैनर से उन्होंने अपनी सरकार को चलाया. एंड ही वॉज इम्प्रिजन इंक्लूडिंग 2 फॉर्मर प्रेसिडेंट्स को, इज ओन वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनी अपोजिशन लीडर्स को इन्होंने जेल में डाल दिया. तो कुछ ना कुछ ब्रूटली रहा वहाँ पे. इन द इलेक्शन ऑफ 2018 अपोजिशन पार्टीज पुट अप अ joint candidature by Mohammad Saleh. These elections were called as the final referendum of democracy. Solly won the elections with 58% of the popular votes and became the president of Maldives. ठीक है ना? यामीन ने अपने हाफ ब्रदर को भी मरवा दिया था. ठीक है. नाउ इंडिया हैविंग रिलेशंस विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज. सो पाकिस्तान हैज़ बिन कॉन्फ्लिक्ट ऑन कश्मीर इशू. ठीक है ना? सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करें. पाकिस्तान आल्सो एडेड द कश्मीरी मिलिटेंट विद आर्म्स एंड एम्यूनेशन टू इंडिया. ये ठीक है ना? स्पाई एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI is also involved in various anti-Indian campaigns in Pakistan. ठीक है ना? The conflicts between India and Pakistan were the sharing of Indus water. ठीक है ना? Help the World Bank. India signed the Indus Water Treaty in 1960s में साइन किया. ठीक है ना? So there was also an agreement of the Sir Creek in the run of Kutch area. Recently past tensions were in between the two countries. डिप्लोमेटिकली जो है सिचुएशंस को सुधारने के लिए किया जा रहा है. मीन्स वी आर आल्सो हैविंग ट्राइंग टू हैव गुड रिलेशंस विद आवर नेबरिंग कंट्री. इंडिया एंड बांग्लादेश. सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट है इलीगल इमिग्रेंट्स का. सपोर्ट ऑफ एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटल ग्रुप्स. ठीक है ना? फंडलिस्ट ग्रुप्स एंड द रिफ्यूज़ल टू अलाउ इंडियन मिलिट्री टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी. ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है. बॉर्डर डिस्प्यूट्स वर देयर. बांग्लादेश प्लान्ड इंडिया टू फेस एक्टिंग एन रीजनल बुली एंड एनकरेज रिबेलियन इन द चिटगांव हिल्स में. बांग्लादेश ये इंडिया के ऊपर वो लगाता है कि चिटगांव हिल्स में इंडिया जो है रिबेलियंस करवाती है, तो उसका भी. बट एंड द एरिया ऑफ कॉपरेशन वर इकोनॉमिक relations with each other. Bangladesh is a part of Indian look east for policy. ठीक है ना? And in disaster management and environment issues in both the countries are having sharing their ideas. India and Nepal. वार्म रिलेशंस बिटवीन नेपाल एंड चाइना. ये जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि चाइना हैज़ हैविंग गुड ट्राइंग टू मेक रिलेशंस विद पाकिस्तान, ओ सॉरी नेपाल, and that creates India in attention. Moistest activities in Nepal that are also being ठीक है ना? नेपाल blames India for interfering in its internal affairs. ठीक है ना? To assess both the country. ठीक है ना? These are the points of conflict between India and Nepal. Now the cooperation points. India, a treaty between the two countries allow the citizen to both the countries to travel and work in the other. मतलब इंडिया as you know that Nepal is the only country where you are not needing any passport and visa to go there. ठीक है ना? तो we are not having any passport and visa between these two countries. And trade and scientific corporation is also there, and electricity generation there are some. India and Sri Lanka. Now
After the military intervention of 1987, India follow a policy of disengagement in Sri Lanka. ठीक है ना. कॉपरेशन इंडिया साइंड द FTA विद श्रीलंका. ठीक है ना. पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन बाय इंडिया हैज़ ब्रॉट द टू कंट्रीज टुगेदर. जो सुनामी के बाद जो इंडिया ने स्टेप फॉरवर्ड किए तो दोनों कंट्रीजों से काफ़ी नज़दीक आ गए. नाउ इंडिया एंड मालदीव्स शेयर देयर वार्म रिलेशंस. In November 1988, Indian military helped the Maldives against the Sri Lankan Tamil mercenaries. तो उसमें इंडिया ने हेल्प किया मालदीव्स की श्रीलंका के अगेंस्ट. इंडिया has also helped Maldives in its economic development, tourism and fisheries. Now India and Bhutan. There is no such a conflict between India and Bhutan. Bhutan is a very cool and calm country. Bhutan helped India to weed out the guerrillas and militants from their territory. ठीक है ना. फ्रॉम द ईस्ट ऑफ इंडिया में भूटान वहाँ से हेल्प कर रहा है इंडिया के जो गुरिल्लाज हैं वहाँ से. ठीक है ना. इंडिया इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड टू भूटान. भूटान के लिए सबसे बड़ी एड जो है डेवलपमेंट की वो इंडिया प्रोवाइड करता है. ठीक है. नाउ अपार्ट फ्रॉम इंडिया, दिस इज एन अनदर 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दैट अपार्ट फ्रॉम इंडिया व्हाट इज द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया. भैया जहाँ पे ये तो हमने इंडिया की बात की, इंडिया के अलावा कौन से एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं. नेपाल एंड भूटान हैज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर द माइग्रेशन ऑफ एथनिक. ठीक है ना. नेपालीज इनटू भूटान में जो जा रहे हैं वो एक इशू है. बांग्लादेश एंड म्यांमार आर इन ए कॉन्फ्लिक्ट ओवर द माइग्रेशन ऑफ रोहिंगास जो शरणार्थीज हैं उनका इशू है. बांग्लादेश एंड नेपाल हैड ओवर डिफरेंस ओवर द फ्यूचर ऑफ द हिमालयन रिवर वाटर्स पे दोनों कंट्रीज का इशू रहे. ठीक है ना. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सार्क. अब हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं. दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. द मीनिंग ऑफ सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन. इट फॉर्म्ड इन 1985 by Bangladesh, Bhutan, Maldives, India, Pakistan and Sri Lanka. ठीक है ना. What is its factors causing the birth of SAARC? What are the factors? Central location of South Asia is in Asia. All countries gained independence after World War II. All countries share some cultural same and history since under the British colonial rule. This region is mostly poor and overpopulated region है ये. Main economic activities in all these countries agriculture. तो these are the factors, मतलब ये जो reasons हैं. What are the areas of cooperation? Human resource development. In transportation all these countries help each other. And health and population activities, telecommunication, science, meteorology and technology, agriculture and rural development. Now what are the objective of SARC? To promote and strengthen collective self-reliance among the countries South Asia, to contribute to develop mutual trust, understanding, appreciation of one of the another problems they try to maintain. Now SAFTA, this is another term that is important. SAFTA agreement was South Asian Free Trade Agreement, was signed on January 6, 2004 during the 12th SARC summit held in Islamabad. This came into enforce 1st January 2006. Means for the trade liberalization program TLP commenced from 1st January 2006. It aims to lower. SAFTA का जो मेन एम है वो ट्रेड टैरिफ्स को लोअर डाउन करना है. ठीक है ना. इट्स टू न्यू आइडिया era of relationship of peace and cooperation will emerge in South Asian countries में इसका मेन मोटिव यही है. But some neighboring countries fear that SAFTA is a way for India to invade their markets. कुछ लोग ये भी समझते हैं, इस बात का डर है उनको. ठीक है ना. So this is the important point that I have discussed for today's class. Next I will discuss in the next class. So have a good day for today, students.